अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वादे के मुताबिक मैंने टर्की का व्लॉग जो है अपलोड कर दिया है। यहाँ पर मैं ये पहला दिन था जहाँ पर मैं बाहर निकल कर घूमना फिरना चाह रही थी और सुबह का आगाज़ मैंने नाश्ते के साथ किया। मैं सारी वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर सकी तमाम नाश्ते की टेबल्स की, बट ये थोड़ा सा क्लिप्स थे। Nashta, nobody does it better than Turkish people. There was a lot of variety and I thoroughly enjoyed my breakfast. But then I was being very careful क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे बड़ा severe allergic reaction हुआ था खाने से। खैर नाश्ता करने के बाद मैंने टैक्सी की और आई वेंट टू द सिटी सेंटर। मैं एक्चुअली जिस होटल में रह रही थी ये बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब था, मतलब एयरपोर्ट से 6 से 8 किलोमीटर के फासले पे था, जिसका एक फ़ायदा था कि आप एयरपोर्ट तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक छोटा सा नुकसान ये था कि मैं सिटी सेंटर से बहुत दूर थी। और टर्की में एक चीज़ जो कि मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो है टैक्सीज़। टैक्सीज़ कैन चार्ज यू लाइक डबल द ओरिजिनल अमाउंट, थिंकिंग कि आप वहाँ पर नए हैं या आप टूरिस्ट हैं और आपको असल जो प्राइसेस हैं उनका नहीं पता होगा। तो मेरा मशवरा उन सब लोगों को ये है जो टर्की को विज़िट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, कि या तो आप सिटी सेंटर के अंदर होटल जो है वो अपना बुक करें। उसमें ये है कि ईदर वे आपको 2 बार टैक्सी का शदीद महंगा किराया देना है। एक दफ़ा जब आप एयरपोर्ट से अपने होटल पहुँचेंगे, दूसरी दफ़ा वापस जब आपको होटल से एयरपोर्ट जाना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो अपना ट्रिप है उसको इस तरह से प्लान करें कि आप मैक्सिमम 2 या 3 दफ़ा में पूरा शहर देखने की कोशिश करें, जो कि एनीवेज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आपने टैक्सी करवानी है तो गो विद बी टैक्सी और ऊबर, क्योंकि ये वहाँ पर जो लेजिट टैक्सी सर्विसेज हैं वो हैं। नेवर गो फॉर प्राइवेट टैक्सीज जिनके ऊपर टैक्सी का लोगो लगा होता है, बिकॉज दे विल चार्ज यू आई थिंक 1200 to 1500 टर्किश लेरा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 40 to 50 or 60 किलोमीटर्स। मैं क्योंकि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग निकली थी नाश्ता वगैरह करके, आई थिंक बाय 8 o'clock आई वॉज ऑन द रोड। और ये टैक्सी ड्राइवर हलील भाई, ये ही वाज फ्रॉम बी टैक्सी। और इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा जो था उसका टैक्सी का फेयर मैंने इनको पे किया। इट वाज 450 मीटर चल रहा था, सो आई न्यू कि मैं जो भी पे कर रही हूँ वो बनता है इसका। और एनीवेज द डिस्टेंस वाज ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स एंड ही वाज एक्सट्रीमली नाइस पर्सन। जब मैं टैक्सी में बैठी तो भरपूर बारिश हो रही थी एंड द मिरर्स वर फॉगिंग अप, तो उस टाइम तो मैं इतनी क्लियर व्यू नहीं ले सकी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम शहर के करीब होते जा रहे थे तो बारिश भी थोड़ा सा सेटल हो रही थी और फिर मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई टैक्सी में से। टर्किश बिल्डिंग्स अल से के इतना प्यारे उनके डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इस्तांबुल देखने वाला शहर है अगर आपके पास टाइम है तो। अल से कि इस्तांबुल वंस इन अ लाइफ टाइम यू हैव टू विज़िट दिस प्लेस। मल्टीकल्चरल सिटी है, आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है, बिल्डिंग्स का लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं एंड everybody will be so willing to help you out with like about the history of the place. लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो जितना वहाँ पर ट्रिप था मुझे तो कोई स्कैम वगैरह नहीं, एक आधे के अलावा आई डिडंट गेट इनटू एनी स्कैम्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सुल्तान अहमद स्क्वायर की तरफ रवा दवा हूँ। टैक्सीज़ जो हैं, ये गाड़ियाँ हैं, वो एक हद तक ही आ सकती हैं, उसके बाद ऑनवर्ड्स आपको जो है पैदल ही अपना सफ़र करना होता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे इतना कोई सही आइडिया नहीं था कि किस साइड पे जाना है। और दूसरा मैंने एक गलती की कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी हूँ तो मुझे वहाँ से टर्किश सिम लेना थी, दैट वाज ऑन माय लिस्ट, बट समहाउ आई टोटली मिस्ड दैट, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया। एंड देन लेटर ऑन मैं शहर से इतना दूर थी, लाइक जो एयरपोर्ट के पास था होटल मेरा, तो वहाँ पे करीब की कोई मार्केट में जाने का मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ से सिम लूँ। तो मैंने किया क्या कि मैंने अपनी आइलैंड सिम में आने से पहले ही एक्स्ट्रा कुछ मैंने उसमें पैसे डाल दिए थे, तो मैंने वो रोमिंग ऑन किया एंड देन आई वाज फॉलोइंग गूगल मैप्स। मेरी पाकिस्तानी सिम पे भी हमेशा रोमिंग ऑन ही होती है, तो दैट हेल्प्ड मी लिटिल बिट विद डायरेक्शंस। लेकिन मेरा मशवरा यही होगा जो लोग भी टर्की देखना जाना चाहते हैं कि आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरें वहीं से आप टर्किश सिम लें। आप लोगों के पास इंटरनेट और डायरेक्शंस वगैरह बहुत इजी हो जाएगा आपको ढूंढना।
खैर यहाँ पर एक ग्रुप था तो मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखे, बिकॉज सम टूर गाइड्स दे आर लाइक लिटरली वेरी लाइक रूड। वो जैसे कि देखते हैं कि कोई उनके ग्रुप के अंदर बंदा है जो जिसने उनको हायर नहीं किया, तो आई हैव सीन देम रिएक्टिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे विद सम ऑफ द टूरिस्ट। खैर मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि किस साइड पे स्क्वायर है, सो आई केप्ट रीजनेबल डिस्टेंस विद देम एंड स्टार्टेड फॉलोइंग देम। उनको फॉलो करते करते मैं सुल्तान अहमद स्क्वायर में पहुंच गई, और इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेस आई हैव एवर सीन। इतना सीरीन, इतना पीसफुल जगह है ये। And I was still thinking to follow them, but then there was a bhai sahib and he wanted me to take his pictures, or वो उससे उसकी pictures लेते हुए, and then I thought okay मेरी भी pictures किसी ने लेनी है, so I asked him to take my pictures, so that's how I have few of my pictures in the square. So ऐसा pictures लेते लेते ही जो था ये group, I lost the sight of them, क्योंकि इतने ज़्यादा tourists हैं, it's really difficult to keep a trail with whoever you are following. यहाँ पर मैं जब पहुँची हूँ पिक्चर्स लेने के बाद, आई वाज स्टिल रोमिंग अराउंड, एंड आप आगे देखेंगे यहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें बनी हुई हैं। लोग बहुत सुबह हम लोगों से भी बहुत पहले आके लाइनें बना चुके थे कि जैसे हाया सोफिया को वो गेट को ओपन करेंगे तो लोग फ़ौरन फ़ौरन अंदर चले जाएंगे। आई थिंक गेट की ओपन होने का टाइम 9 बजे का था, और लाइनें इतनी लंबी थी कि लग रहा था कि लोग आई थिंक 6 साढ़े 6 ऑनवर्ड से यहाँ खड़े थे। अभी हम यहीं घूम फिर रहे थे कि आई मेट दिस टूर गाइड सनान। सनान इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन टर्की। जो मेरा बॉस्फोरस क्रूज़ का टूर गाइड था उसका नाम भी सनान था, एंड देन दिस गाय हिज नेम वाज आल्सो सनान। देयर वर 3 पीपल इन द ग्रुप, और अब वो लोग जैसे टूरिस्ट को पकड़ पकड़ के ला रहे थे, आई मीन लाइक दैट्स द वे टू डू बिजनेस। एनीवेज मेरा आपको एडवाइस यही होगा कि इफ़ यू वांट टू नो द हिस्ट्री, क्योंकि देख तो आप खुद भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको हर चीज़ का सिग्निफिकेंस जानना है, और आप अगर मेरे जैसे हैं जिसको हिस्ट्री के साथ कोई इतना ज़्यादा आपका राब्ता नहीं है, या आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हिस्ट्री किसी जगह की खोल के पढ़ें, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जहाँ पर भी इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं तो डू हायर अ टूरिस्ट गाइड। you'll end up paying him I think $30 or $40। और दूसरा ये कि प्लीज़ अपने पास चेंज में डॉलर्स रखें, बिकॉज दे वोंट गिव यू योर चेंज बैक। मेरे साथ ऐसा हुआ था यहाँ पे। आई हैड टू पे हिम आई थिंक $40 एंड आई डिडंट हैव $40। मेरे पास चेंज नहीं था, सो आई एंडेड अप गिविंग हिम more than what was decided, and then they told me they'll give me the change at the end of the tour, but they ended up giving me only half of what I was supposed to get. So anyways, the tour was totally worth it, so yeah। अच्छा, उसके बाद हम लोग उन्होंने हमें बोला कि एक मीटिंग टाइम होगा जिस पर आप सारे हाया सोफिया के गेट के सामने आ जाएं, तो वहाँ से हमें अंदर लेकर जाएंगे। So I had, I think, almost 30 to 40 minutes to roam around। तो मैंने कहा अगर हो सके तो इसके बीच में मैं सामने जो सुल्तान अहमद मॉस्क है वहाँ जाकर हो आती हूँ। व्हेन आई वाज गोइंग देयर तो वहाँ पर मुझे पता चला कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स की वजह से या रेस्टोरेशन वर्क हो रहा था वहाँ पर, जिसकी वजह से उन्होंने सुल्तान अहमद मॉस्क को बंद किया हुआ था। सो दैट वाज अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन चले मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैंने थोड़े से क्लिप्स मॉस्क के बाहर से बनाए, और उस उतने में ही जो आई थिंक वो टाइम हो गया था हाया सोफिया का दरवाज़ा खुलने का, तो मैं यहाँ से थोड़े से क्लिप्स बनाकर हाया सोफिया की तरफ चली गई। अच्छा, आगे अब जो टूर गाइड है ही विल बी टेलिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हाया सोफिया। हाया सोफिया 3 दफ़ा बनी थी, और जो पहली हाया सोफिया है उसका आपको कोई भी रुइंस जो हैं वो दिखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। सेकेंड हाया सोफिया की रुइंस की मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, वो वहाँ पर टूर गाइड भी आपको बताएगा। ऑल्दो हिज द वे ही स्पीकिंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, बट आई होप कि आपको उसमें से कुछ बातें उसकी जो हैं वो समझ आ जाएँ। और तीसरी हाया सोफिया वो सही सलामत हम सबके सामने खड़ी है, एंड इस वीडियो के अंदर आप लोग उसको देखेंगे भी। हाया सोफिया के हॉल से गुजरते हुए आई जस्ट कुड फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर बहुत हिस्ट्री है।
हु न्यू आपसे पहले कितने बड़े बड़े लोग और इन हॉल्स से गुजरे हैं और इन जगहों ने क्या क्या देखा है ओवर द period of time. So it was a beautiful experience of seeing this place. Yeah, honestly, I was a bit overwhelmed, knowing कि मैं ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ पर बहुत बहुत हिस्ट्री है, बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे. सो जैसे ही आप हाया सोफिया के अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो एंट्रेंस पर वो एक सिक्योरिटी चेक है और वहाँ पर आपको अपने जैकेट्स, मफलर्स, अपने बैग, एनीथिंग यू हैव, इट हैज़ टू गो थ्रू चेकिंग मशीन. तो दैट वाज अ बिट ऑफ इनकन्वीनियंस, बट देन अगेन आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. और क्योंकि हम सबकी सेफ्टी के लिए था, सो आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट कि एटलीस्ट हम लोग अंदर जा रहे हैं नोइंग दैट एवरीथिंग इज़ लाइक प्रॉपरली चेक्ड. उसके बाद व्हेन वी एंटर्ड तो सिनान भाई साहब ने सबको बोला कि ही विल वांट टू हैव हिज टूर का जो मनी है, लाइक वो जो पैसा उसका प्रॉमिस हुआ था हमारे साथ, वो यहीं से पॉइंट पे कलेक्ट करेगा. उनको पैसे देने के बाद ही टोल्ड अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉलम देयर. ये जो अभी पहले वो दिखा रहे थे, वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था एल्डोक्सिया, और उसने कहा कि ये अंदर जाके हमें बताएगा कि एल्डोक्सिया की क्या हिस्ट्री है. एल्डोक्सिया बेसिकली वहाँ की एक मलका थी जिसकी वजह से जो फर्स्ट हाया सोफिया थी वो तकरीबन जला दी गई थी. ये आगे आपको सिरान की हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं उसमें आपको इसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. Hagia Sophia was built 3 times on the same location. 3 times. Okay, this is the third Hagia Sophia. There is no any remains belong to the first Hagia Sophia because completely burned and collapsed. If you want to see the something belongs to the second Hagia Sophia, just look at that part, that section. That was the second entrance of the Hagia Sophia. But because of Sorry. today, why I am showing you the here? If you look at all the marbles, what figure you can see over there? Yes, land and the ships, yeah? It's very important for the Christianity because this land symbol of the apostles of the Jesus. Even today, when we look at it here, we can understand that. The Roman Empire, they already accepted Christianity as an official religion of the Roman Empire. Okay? Let's do that. Three times in the same location. This is the third episode. They built this structure 1,500 years ago. 1,500 years ago, the Roman Empire was Justinianus. He was the king of the Roman Empire. He built this structure 1,500 years ago. So now, did we hear about the Constantine? Great Constantine. So the Constantine is very important for the Roman Empire because he did one of the biggest renovation for the city. He accepted Christianity as an official religion of the Roman Empire. Before he accepted that religion, what was the religion of the city? The paganism. What's the meaning of the paganism? The Greek mythology, Greek gods. People who live in the city, they were believing in Poseidon, Zeus, Apollo, they were believing in Greek gods. But the Constantine, he did the renovation, he changed the religion. And he forced the people to become a Christian as well. That's the reason when we come to the inside the Hagia Sophia, we can see the Hagia Sophia with the two corridors. Look, now here we are called as a narthex. Narthex means the corridor of the church. Okay, this one is also narthex. If you visit any church around the world, you will see that church with the one narthex. But here, why they built this structure with the two narthex, two columns? Because in the city there were two religions. The first religion was the paganism. Second one is the Christianity. Okay? In order to talk about the foundation of the paganism, we need to go back to 600 before Jesus. That means pagan religion 1,000 years older than the Christianity. So now, in Hagia Sophia, there is one more gallery, and that gallery contains the upstairs. About the religion,
They will write all rule of the religion on the white tablets, brought here. They can see the rule of the city. That's the reason today. Over there we can see the example. Same angle, we can see the sarcophagus of the empress. Okay, that one came from different church to here. It belongs to the empress. It is still her bones, including the inside of that marble structure. Okay, on the right, that mother of the Constantine, by the way. On the right side, no, is that mother? On the right side, there is a baptized, when the Christian children. Look at the video of Hagia Sophia. Here we can see one of the most important mosaics. Just look at that video of the mosaic. Jesus is sitting on the throne. He is holding the piece of the Bible. On the Bible there is a one inscription. It says, "May peace be with you and the light of the world." On the right side, inside that circle, we can see Archangel Gabriel, and the left side, she is Mother Mary. And there is a one king, he was bent over. Did you see that person? Who was the king of the Macedonian dynasty? He attempted to have his sins forgiven. That's the reason he was bent over against Jesus, because he married 3 times and he lost all his wives without getting a son. Okay? According to the tradition of the Roman Empire, the king can marry our shoes, put the bags for going. Okay? Let's go to the inside. अब हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर और वहाँ जाने से पहले हमें अपने शूज़ उतारने हैं. So now they brought this marble from Marmara region here. They were cutting with the saw, okay, reversing, connecting each other, put on the wall like that, or it can give the same design, same aesthetic to each other. Okay, that is the one of the best handiwork of the Roman architecture that we can see on the wall. The door 37, okay, it belongs to the 11th century, 12th century. But if you want to see the something original belongs to the door in 537, just look at here, guys. Look, you know the cedar tree? Cedar tree. They were using the kind of cedar tree, okay? But the cedar tree can be the rot. So that is the original door of the Hagia Sophia. But they covered with the bronze fan because they didn't want to forget the original thing. But at least we can see. Bismillah. Is there clean? We are mostly praying on the carpet. So now. So now, when we come to the inside of any structure, okay, first of all, we have to look at the floor. If we see the floor, if we see the carpet on the floor, we can understand that is the mosque because we are praying on this carpet. According to Islamic architecture, carpet means the symbol of the heaven. So, if you see that line on the carpet, it has a one special message to the Muslim people because it's showing to the direction of the Mecca to the us. When we pray, okay, we are putting our forehead and the nose on the carpet. That's the reason every time we are cleaning the carpet. When we put our forehead on the carpet, what we are doing? We are reading the verses of the Quran. You know, the Quran, holy book of the Muslim, we are reading the verses of the Quran when we put our forehead on the carpet. We just mentioned about the declaration of the God. So today, okay, the function is the mosque. So that's why here we are calling the female part because the Muslim woman coming here for the pray. Okay, my religion says the man and the woman should pray separately. That's the reason. Here is the female part. The man is there praying over the main center of the mosque. Okay. On the right side there is a one column. Just look at that column. It has a many legend about it. Many legend, many story. Okay, they say this bronze panel came from house of the Virgin Mary to the here. So you know the story of the Virgin Mary. When she got pregnant, nobody believed her. One day while she cried, her tears dropped onto that bronze panel and her tears
melted to that bronze panel too. If you see that hole over there, that is the legend. Okay. So the people who live in the Constantinople, they call that column as a wishing column because when they come to the inside the Hagia Sophia, they were just putting their finger in it. Okay? They were just wishing like that. Even if you look at the column, look how they just carved the marble with their fingers. To become pregnant. That's why it's in the women's section. Let's go there. Still, we didn't speak about the history. This is the general information. Sorry. So inside Hagia Sophia there are many doors. Okay. If you look at that door, this is the imperial door. This is the imperial door. Guards. Kingdom of heaven. Just look at me, please. Look at me. This is the imperial door. Imperial door. It was only used by King of the Roman Empire. I just want to show you the floor. Just look at the floor. Did you see the gaps on the right side and the left side? The reason why there are two gaps over there, because when the king comes inside, the soldiers of the Roman Empire should give the salutations to the king. When the king come, they were hitting their fists to the floor. 1,000 years, they did that weird tradition and they gave a shape to the floor of the place. Just look at it. Third Hagia Sophia, the construction of the third Hagia Sophia started 532 and completed 5 years later. And they opened this structure in 537 as the biggest cathedral around the world. They named here as a Hagia Sophia. Sophia is not name of the woman, by the way. Sophia means holy wisdom or holy information. Today, we are using the Hagia Sophia as a mosque, but still we are calling this structure as a Hagia Sophia mosque because this name is used for Islamic structures. So now, this structure is important for three religions. Okay, first religion, paganism. Second one, Christianity. Third one is the Islam. When we come to the inside of the Hagia Sophia, if you look at on the wall, you can see Poseidon. Exactly. Poseidon had the one trident. Okay, so when he hit this trident to the floor, only you can find in Egypt. So they brought from Egypt to here, and they use for that. In Hagia Sophia there are more than 104 columns. If you look at the head of the columns, just look at the head of the columns. Did you see the white part? Yeah. Okay. You can see the one small circle. Did you see that circle too? Yeah. Look at the here. Look at it. Did you see Okay. that circle? Yeah. Okay. Here's also. There are 104 columns inside the Hagia Sophia. Every columns of the Hagia Sophia carrying a different names of the king of the Roman Empire and the queens of the Roman. That is the one of the best handicraft of the Roman architecture that we see inside the Hagia Sophia. Older than the Hagia Sophia, but Ottoman architects, they brought this marble cubes from Bergamo to here, okay? And you know, they already changed this structure to mosque. And the people coming here for the pray. And when they pray, what they do, they are just wasting their energy. They are spending their energy. Ottoman architects carved inside that cubes and it contains the water and the sewage juice for the people can drink and for feel fresh. There are two marble cubes, marble jar inside the Hagia Sophia. We can see. This is the first one. Second one is over. Inside the Louvre Museum. Yeah.
one of them. They found the three cubes. Okay, they used the two for the Hagia Sophia, and they sent the one marble jar to the Louvre Museum. But it was during the Ottoman Empire. During the Ottoman Empire. During the Ottoman Empire. Come back. Wow. The marble structure is from Complete every marble Sultan Hagia Sophia complete older than the Hagia Sophia. It belongs to the before Jesus. Islamic edition. In 1453, Ottoman Empire, when they attacked the Constantinople, what they did, they changed the Hagia Sophia church to mosque for show the symbol of the countries. So the before, there was a one mosaic of the Jesus over there. But Ottoman Empire, they closed that mosaic because according to the Islam, human face cannot be inside the mosque. That's the forbidden. But which mosaic was over there? This mosaic before was the universe. We can put it like that. But Ottoman Empire in 1453, it just stopped that mosaic because Islam don't accept the face inside the mosque. And they carved it. There are many more. So I got this one from Korea. Korean church. That is one of the other churches in Istanbul. If we go to any church in the Istanbul, same mosque. Normally there are 7, but we can see the 3 of them for today. Okay, they are the religious leader of the Hagia Sophia. And the first, do you remember the name of the queen? Evdoxia. So now, the Roman Empire, they already accepted Christianity. But that woman, okay, she made one of her naked statue, put on the column, placed next to the Hagia Sophia. If you made one naked statue, that means that you are not respecting Christianity and still you are worshipping the part of the paganism. Because naked statue means that you are showing yourself like a god. That can be the part of the pagan. So nobody dared to show to the queen. And his nickname was Golden Mouth. Golden Mouth. What he think, directly he say the queen. Doesn't matter, you can be the queen, you can be the king. What he think, he directly say. So he called the queen as a Isabel. Isabel means the devil. Okay? So, but he is the religious leader. You cannot exile, you cannot kill that religious leader. What they did, they exiled this religious leader to the different city. But the people who changed their religion, because before they were the pagan, but they became a Christian. When they saw that naked Hagia Sophia, second church, and the third church we call as a Hagia Sophia. Magna Ecclesia. So, here we are calling as an Amphilion. Amphilion means the main center of the world. Main center of the world. The Roman Empire were using the regime. With one of the best architecture of the Roman Empire, just come here. Give me the right answer. Okay, I will give you money back. Originally belongs to the 15th century before Jesus. We already know that. Older than the Hagia Sophia. Okay? More or less 40 tons weight. 40 tons. Look at the here. What's the name of this material? Just touch it and you can just let it. It's not brass, Not brass. is it? I am sure you will understand the English name, but I am not sure they will understand. So, do you know the lead? Yeah, lead. L-E-A-D. Yes. This is the lead. This is the lead. And then, so this lead. On the Friday noontime, if you are